जी आयां नूं प्यारे विद्यार्थियों, 9th क्लास दी साइंस दी बुक दा चैप्टर नंबर 5 दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो इस चैप्टर दा अगला पार्ट नोट्स 5 इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੀ ਰੈਡੀ ਵਿਦ ਯੂਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਐਂਡ ਪੈਨ ਟੂ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨ ਦਾ ਨੋਟਸ। ਬਾਅਦ ਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਨ ਯੂਰ ਓਨ। इसी चैनल के उत्ते 9th मैथ प्लेलिस्ट है, 9th मैथ नोट्स एक प्लेलिस्ट है, मैथ ट्रिक्स एक होर प्लेलिस्ट है, तो 9th इंग्लिश MCV मेन कोर्स बुक भी एक प्लेलिस्ट है। सो तुसी वदा बेनीफिट भी ले सकते हो। सो शुरू करिए। सेल वॉल, प्लांट सेल्स एडिशनली, that means it is an extra thing, have another rigid outer covering called the cell wall. The cell wall lies outside the plasma membrane. Each cell has got a plasma membrane or cell membrane, but the plant cell, in addition to this cell membrane, have one more covering, one more outer layer, which is known as cell wall. The purpose की है, it gives shape and rigidity to the cells. The cell wall is mainly composed of cellulose. ऐसा शब्द याद रख लो। The main component of a cell wall is cellulose, and it is a non-living complex substance. It means cell wall consists of dead cells. So cellulose जड़ी है, it's a dead cell, ठीक है? It offers structural strength to the plants. They remain rooted to the ground. The cell wall protects plants against high wind speeds, temperature variations, गर्मी, ठंड, झक्खड़, हनेरी, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, मीह आ गया, कभी ह्यूमिडिटी हो गई, कभी ड्राईनेस हो गई। सो ऑल दीज चेंजेस, ठीक है। अ सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल एंड जिदा जो सेल मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, बट सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल एंड इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। सो ਇਹ ਦੋ ਦੇਖੋ डिफरेंसिस अगे ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। सो याद रखना है कि देयर इज नो सेल वॉल इन एनिमल सेल्स। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ सेल membrane is selectively permeable, but cell wall is freely permeable. Jute, cotton, coconut fibers are examples of cell walls of their dead cells. ठीक है, आगे चलिए। Plastid. Plastid is any of the small colored particles in the cytoplasm of the cells of plants. जो cytoplasm है, that jelly-like substance outside the nucleus and inside the cell membrane, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ colored particles ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Those colored particles are collectively known as plastids. Any colored particle which is in the cytoplasm of a plant cell is known as a प्लास्टिड। याद रख लो, छोटे छोटे ਜਿਹੜੇ आंसर्स ने एक नंबर ਦੇ आ सकते हैं, ठीक है। फिर प्लास्टिड ਦੀ टाइप है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ਹੁਣ क्लोरोप्लास्ट की है ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड containing green pigment chlorophyll is called a chloroplast. plastids are of many types. ਜਿਹੜੇ प्लास्टिड ग्रीन कलर ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ प्लास्टिड ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। The chloroplast has got a green pigment which is chlorophyll, and it is chlorophyll that gives green color to the leaves of a plant. ਜਿਹੜੇ हरी पत्तियां नजर आंदियां हैं, it is because of the green pigment chlorophyll. तेरा function की है, its function is to synthesize starch and sugar, मतलब कि food, carbohydrates and sugar during photosynthesis using sunlight and carbon dioxide, ठीक है। The chloroplast has DNA and it can divide. क्लोरोप्लास्ट मतलब कि ਇਹ DNA भी ਹੁੰਦਾ है and it can divide itself, ठीक है। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ याद रखनियां है। ਇਹ छोटी छोटी हैगी प्लास्टिड एंड क्लोरोप्लास्ट। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ डायग्राम देखांगे और ਤੁਹਾਨੂੰ दिखावांगे। ਇਹ देखो बच्चों, इट्स अ कंपैरिजन ऑफ दिस इज एनिमल सेल, इट डज नॉट हैव एनी सेल वॉल, इट हैज गॉट अ सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस इज द प्लांट सेल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੋ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ इज ओनली वन लाइन ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, देखो। सो आउटर लेयर इज जड़ी है वो दैट इज सेल वॉल, देखो सेल वॉल, दिस इज सेल वॉल। the inner layer is cell membrane,
which is also an animal cell and it is also in plant cell. ठीक है, ਇਹ hollow area ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ vacuole ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ hollow in the cytoplasm, this is also vacuole. Now you notice that vacuoles in animal cells are small in size, but vacuoles in plant cells are larger in size. So nucleus is there, and nucleus हैगा, ਇਹ भी nucleus हैगा, ठीक है. ਇਹ cytoplasm हैगा, jelly like substance, and this is also cytoplasm, सारा cytoplasm है, देखो सारा, ठीक है. This is cytoplasm, ठीक है. ਹੁਣ देखो ग्रीन ग्रीन नजर आ रहे हैं डॉट, ग्रीन ग्रेन्यूल्स, ग्रीन पार्टिकल्स, these are chloroplasts, ठीक है. ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ yellow ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ. So all these dots of different colors, ਚਾਹੇ yellow ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, green ਦੋ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, they are plastids. ਤੇ ਜਿਹੜੇ plastids green color ਦੇ ਨੇ, they are known as chloroplast. ਇਹ ਦੇਖੋ. So these are all plastids. this is ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, this section ਦਾ magnification ਹੈਗਾ, magnified, मतलब कि इस एरिया ਨੂੰ ਇੱਥੇ मैग्नीफाई करके दिखाया. So this inner layer, this is cell membrane, and outer layer, this is cell wall. So you see, plant cell has got cell wall, but animal cell does not have any cell wall. So this vacuole is small in animal cell, vacuole is bigger in plant cell, ठीक है. फिर अगली गल है, plastids are there, but there are no plastids here, ठीक है. So a chlorophyll है, which is the plastid which is green color is known as chloroplast. So ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਕਾਮਨਲੀ ਆਸਕ ਕੀਤਾ, मतलब ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਬਿਟਵੀਨ plant cell and a animal cell with and draw a sketch. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੈਚ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ, ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਸਕੈਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦੇਖिए plasmolysis. What is plasmolysis? The shrinkage or contraction of the cell away from the cell wall is known as plasmolysis. देखो एक एक लाइन की डेफिनेशंस हैगी हैं. So what is plasmolysis? The shrinkage or contraction of the cell from the cell wall is known as plasmolysis. ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Why it happens and when it happens? It happens when a living plant cell loses water through osmosis, ठीक है. When living plant cell discards, gives away or loses water through osmosis, then what will happen? It will shrink, it will contract. Cell wall will remain there, it will move away from the, it will move inwards away from the cell wall. Plasmolysis involves loss of water from a cell. It occurs when the cell is in a hypertonic solution. ਹੁਣ ਬੱਚੋ याद करो, पहले नोट्स ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ hypertonic solution ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Hypertonic solution is a solution having a high solute concentration, or in other words a high solute concentration or low water concentration, ठीक है. So we can observe this phenomenon by performing the following activity. So ਜਦੋਂ hypertonic solution ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ plant cell ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ what will happen? It means the concentration of water inside the cell is more and the concentration of water molecules outside the cell is less. So as per osmosis, the solvent moves from high concentration region to low concentration region. So the water will move from the plant cell to the outside, ठीक है. तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? As a result of loss of water, the cell will shrink or contract, and this phenomenon is known as plasmolysis, and this happens when plant cell is placed in a hypertonic solution. ਹੁਣ देखिए ਇਹਦਾ मतलब कि एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है ना. कहते examine the amount of the peel of a raw leaf. एक किस्म का प्लांट होता है, ਉਹਦੀ लीफ ले ली, amount मैंने पता है बच्चों, glass slide with accessories, ठीक है. examine the amount of the peel of a raw leaf in water under a high power microscope, ठीक है. फिर कहते हैं note the small chlorophyll containing green granular chloroplast. ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ठीक है. कहते put a strong solution of sugar or salt on the mounted leaf on the slide. ਉੱਥੇ एक strong solution means concentrated solution ਪਾ ਦਿਓ, sugar ਦਾ ਜਾਂ salt ਦਾ, ठीक है.
to make it a hypertonic solution. Wait for a minute and observe under a microscope. थोड़ी देर लिए wait करो, 1 मिनट लिए तो observe करो. We can see the evidence of plasmolysis because a strong solution of sugar or salt is a hypertonic solution. So what will happen? Water will move out from the cell. We can see plasmolysis happening. That means the shrinkage or contraction of the cell. ਹੁਣ दूसरी गल उसी एक्टिविटी ਨੂੰ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ. Now place some raw leaves in boiling water for a few minutes. ਹੁਣ raw leaves ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ boiling water ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ. Water boil ਕੀਤਾ, ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ leaves ਪਾਤੀਆਂ. This process will kill the cells. It kills the cells. ਜਿਹੜੇ leaf ਦੇ cells ਹੈਗੇ ਨੇ, they are living cells, so they will die after you put them in boiling water. Then mount a leaf on a slide. ਹੁਣ ਜਦੋਂ dead cells ਵਾਲੀ leaf ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ again ਉੱਤੇ mount a leaf on slide and observe it under a microscope. ਹੁਣ again put a concentrated solution of sugar or salt on the mounted leaf on the slide. Again repeat the procedure. Wait for a while and see. ਹੁਣ ਫਿਰ observe ਕਰੋ. Now plasmolysis does not occur. ਹੁਣ contraction or shrinkage of the cell will not occur. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ conclusion ਹੈ ਵੇ ਬੱਚਿਓ, that is only living cells and not dead ones can absorb water by osmosis. ਇਹ ਦੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ only the living cells can undergo the process of osmosis. ठीक है, सो ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ raw leaves ਨੂੰ ਲਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ fresh, ਠੀਕ ਹੈ, which are living cells, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ osmosis ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ then you put the leaves in boiling water to kill the cells and then the osmosis will not occur. ठीक है, और एक चीज और देख लीजिए ਹੁਣ. ओके, ਹੁਣ उल्टा when we put hypotonic solution, ठीक है, when surrounded by hypotonic solutions मतलब की है dilute solution in which the concentration of solute is very less or the solution has got higher concentration of solvent or water. ठीक है, when surrounded by hypotonic solutions the cell swells up. ਸਾਨੂੰ पता है कि cell swell हो जाएगा, the cell, क्योंकि now the water concentration outside the surrounding medium is more, so water will enter from outside to the cell. The cell swells up and builds up. इत्थे ऐसा आना सी बच्चों, the cell swells up and builds up, क्योंकि एक सिंगुलर है, इतने में स्वेल्स लिखा है पर इतने स्पेलिंग मिस्टेक हो गई. सो बिल्ड्स अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल. इन प्लाज्मोलिसिस इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द सेल वॉल, सो देयर इज नो प्रेशर ऑन द सेल वॉल. पर ਜਦੋਂ cell is placed in a hypotonic solution it will gain water and it will start swelling. तो जो swelling होएगी तो it will be putting pressure against the cell wall. The wall exerts an equal pressure against the swollen cell. For action there is a reaction. ठीक है, so as the cell pushes the cell wall will put an equal pressure onto the swollen cell and permits the cells of plants, bacteria and fungi to withstand hypotonic external media without bursting. So एक cell wall ਦਾ ਇੱਕ another ਜਿਹੜਾ function ਹੈਗਾ वो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ because it can be understood with this explanation. ठीक है, so ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ cell wall ਦਾ ਇੱਕ purpose ਹੈ ਵੇ कि it prevents the cells from bursting when the cells are placed in hypotonic environment. ठीक है, so it allows the cells of plants, bacteria and fungi, they all have to withstand hypotonic external media without bursting. Because of their cell walls, such cells can withstand much harsher changes in the surrounding medium than animal cells. So ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा notes part 5 in which we talked about cell wall, plasmolysis, plastid, chloroplast and also the behavior of plant cell in an atmosphere of hypotonic solution and hypertonic solution. So अगले वीडियो तक लिए गुड बाय.
ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।